So students, in previous video we have discussed about the introduction, how Vasco da Gama came to India, how he discovered India and started trading. He was a Portuguese. Okay. Now we will discuss about the European trading companies in India. यूरोप ने जो अपनी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट. So beta, the European came to India primarily for the purpose of trade. It was only afterward that they realized the necessity of entering into India's politics and occupy the Indian territory. The most important article that they sought, including spices and gold. The trade with India was very profitable. We can know this from the fact that Vasco da Gama earned 60 times of the money that he had invested. Huge profit involved in trade with India made these European contend with one another. Okay. So in this part, all the European countries came to India as a ट्रेडर. ओके. सबसे पहले जो लोग ये लोग आए थे, ये ट्रेडर बन के आए थे, बिजनेस करने आए थे, और उसके बाद उन लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और यहाँ पे टेरिटरी मीन्स एरिया, उन टेरिटरीज पे कंट्रोलिंग करना शुरू की. ओके बेटा, why they were interested in controlling over the India or ruling over the India? Because India was a very rich country at that time and the trade was very profitable. एग्जाम्पल दिया है बेटा, 60 टाइम्स 60 गुना प्रॉफिट हुआ था वास्को द गामा को, जितनी मनी उन्होंने इन्वेस्ट की थी. ओके. 60 टाइम्स मीन्स इफ ही हैज इन्वेस्टेड ₹1000, द प्रॉफिट अर्नड वाज ₹60,000. 60,000 रुपये का प्रॉफिट मिला था उनको. ओके. दिस इज एन एग्जाम्पल ना. आई डोंट नो हाउ मच मनी ही हैज invested at that time. Okay, so this was the reason why they were interested in ruling over the India. Now we will discuss about now we will discuss more about the Portuguese. The Portuguese was the first to establish the political power along the west coast of India. They established their settlement in the coastal area Cochin, Calicut, Daman and Diu. They controlled their commercial and political power there for nearly 4.5 century. Okay, 4.5 century, almost 450 years. They controlled over the trading. Okay. By the 17th century, their empire began to decline and could no longer retain their monopoly of trade with India due to various causes. Okay. And in 17th century, their business or power began to decline. Why it began to decline? So there were different causes. What were the causes? So the causes were Portuguese was a small European country and did not have abundant resources. Abundant means sufficient. Okay, or you can say more than sufficient, and manpower to look after this far off trade. Okay, Portugal is a small country beta, and it is far away from India. ठीक है, इंडिया से काफ़ी दूर है. तो उन लोगों के पास न तो इतने रिसोर्स थे, न इतने लोग थे कि वो इतने बड़े बिजनेस को कंट्रोल कर सके. सो अदर मोर पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज डिस्प्लेस्ड देम. इसलिए जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज थी, जो मैंने भी आपको बताई थी, है ना, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, उन लोगों ने इनको डिस्प्लेस कर दिया. द पोर्टुगीज often converted the Hindus and Muslim into Christianity. They also married with Indian women, which angered the people and ruler of the
इंडिया। ओके, वो लोग क्या करते थे बेटा, मुस्लिम और हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे एंड दे मैरिड विद इंडियन वीमेन। इससे क्या हुआ, इंडिया के जो रूलर थे, यहाँ के जो लोग थे, वो उनसे नाराज हो गए। एंड फाइनली देयर इंटरफेरेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ फ्यू इंडियन रूलर्स प्रूव्ड देम कॉस्टली, और ये चीज़ उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ी और इसके कारण उनको इंडिया का बिजनेस छोड़ के जाना पड़ा। ओके बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट पोर्टुगीज। ओके, आई होप all things are clear to you. If you have any doubt, then you can ask. Thank you so much.